Application of paper, we all know that it is a very common commodity used in our daily life, that is paper. And basic material required for paper manufacturing is pulp. And pulp basically is obtained from wood or wood-like materials. Generally, paper is a lignocellulosic fibrous material. Now, lignocellulosic means a material which has cellulose, hemicellulose, and lignin. These are the three major components present in a lignocellulosic material. And in nature, uh, in combined form, these materials are present in wood and wood-like materials. Wood-like material means agricultural wastes like राइस हस्क जिसको आम जुबान में चावल का छिलका कहते हैं wheat husk गंदम का छिलका similarly bagasse a solid material which is left after the extraction of juice from sugarcane. Similarly the leaves and stems and stalks of cotton. So all the basically the waste material or leftover material of an agricultural product. So they also have cellulose, hemicellulose, and lignin in them. So we can use either wood or wood-like material or agricultural waste as lignocellulosic materials. Usually, wood is not preferred for pulp or paper manufacturing, as in order to get pulp from wood, we have to cut down the trees. And if we cut down the trees, it will have a negative impact on the environment. So nowadays, we do not use wood or we do not prefer to use wood. Instead, we mostly use wood-like or agricultural leftover materials. These wood-like or agricultural waste are also known as non-woody materials. So in these materials, we have cellulose, hemicellulose, and lignin. And out of these three components, uh, for paper or pulp manufacturing, we require cellulose. You can say this is the main component which is required in paper manufacturing. So we can separate cellulose from a non-woody or woody material with the help of chemical and mechanical processes. And at industrial scale, at larger scale, chemical processes are the most commonly used process. And generally, when we go on to the pulp manufacturing plant, the raw material used is 45% sawmill residue. Now, sawmill basically is a mill in which wood is converted into various products. Like most commonly, a wood product is furniture, a furniture made of wood. So the leftover wood or waste of a sawmill, that it as it is the material which is derived from wood, it is the leftover product of a sawmill. So it will have lignocellulosic structure. So sawmill residue, log and chips, uh, these are obtained directly from the woods, and recycled paper can also be used for the manufacturing of new paper. So these are the common sources of raw material for the paper industry. And how do we extract cellulose from a wood or non-woody structure? So the left-hand side picture, this one, it basically represents the general structure of a lignocellulosic material. So these green lines, they are basically representing cellulose. The purple one are representing hemicellulose, and the gap between or the white region, it is representing lignin. Lignin basically acts as a glue. It basically cements cellulose. Basically, it basically combines cellulose and hemicellulose
and it provides strength as it has gluey or sticky nature. So it provides strength or a cemented structure to the wood. I mean, if you touch the wood, you will feel that it is a hard material. So that hardness is basically because of the lignin, as it glues cellulose and hemicellulose and provide us a cemented structure. So when we treat the cemented structure of wood or non-woody materials with the help of any process represented by this arrow pretreatment, then the structure becomes like this, the right hand side picture. The treatment will target lignin. As soon as lignin structure is penetrated, it is being damaged or destroyed. The cellulose and hemicellulose, they are set free. When they are set free, uh, so naturally they are fibrous materials like cotton, जिसको हम जुबान में रुई कहते हैं, a soft fibrous material. So when we remove or destroy lignin structure, we get soft fibrous material, and these fibers are made of cellulose mainly and hemicellulose. So through this treatment, we get fibers of cellulose and hemicellulose, while lignin is destroyed. Most commonly used process for pulp manufacturing are Kraft or sulfate pulp manufacturing process or sulfite. In case of sulfite, we basically use the salts of sulfites and bisulfites. These radicals or ions have the tendency to break or penetrate the structure of lignin. As a result, the fibers of cellulose and hemicellulose are set free. The reactor in which this reaction takes place, they are known as digesters. In case of Kraft process, we use a mixture of sodium hydroxide and sodium sulfite. This mixture or this solution is known as white liquor, and the job of this white liquor is to break the bonds between lignin and the fibrous component of the wood or non-woody material. Uh, as in Kraft process, we can reclaim this white liquor at the end of the process. हम जब क्राफ्ट प्रोसेस से गो थ्रू होते हैं तो उस प्रोसेस के एंड में हम दोबारा से सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड को रिक्लेम कर लेते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं. So because of this nature, Kraft pulping process is the most commonly used industrial process for paper and pulp manufacturing. So these are the steps involved in the Kraft pulping process. I will explain these steps directly onto the flow sheet. The details of each steps, it is provided in these slides. So after going through the flow sheet, just go through these details. So till now it was pulp manufacturing, and here we have paper manufacturing, how we convert pulp into a paper. Right. So I will move on directly to the flow sheet. So it starts from this point where the cursor is. These are the logs, the stem of a tree. So the logs are sent into a barking drum. The job of this barking drum is to remove the branches from this log or stem of the tree. Barking drum में जो stem होगा tree का, या जिसको हम आम जुबान में log कहते हैं, उसमें जो branches होंगी, they will be cut off in this barking drum. Then the clear logs are sent into a chipper, and in this chipper, the size of a log is converted, is reduced to small chip size. The size of a chip like Lay's chips. ठीक है, उस साइज तक हम इसको रिड्यूस करते हैं, स्मॉल रेक्टेंगुलर और irregular shape chip particles. So those chips goes into a bin which act as a storage tank for the reactor known as digester. So through chip bin,
the chips of the wood goes into the digester, and from this line, from the right hand side, on the right hand side of the digester, we add cooking liquid, इसको भी हमने white liquid कहा था. And in case of Kraft process, this cooking or white liquid, it is the mixture or solution of sodium hydroxide and sodium sulfide. We also add steam into the digester as well. So the purpose of this steam is to uh, penetrate into the structure of chips, and it basically helps in softening of the surface of the chip. जो स्टीम है वो बेसिकली चिप के या वुड के स्ट्रक्चर में पेनिट्रेट करती है, और इसका काम ये है कि इसने चिप के स्ट्रक्चर को सॉफ्ट करना है. बिकॉज ऑफ दिस सॉफ्टनिंग, the efficiency of the reaction of this white liquor with the chips of the wood, it increases. Means the reaction जो है वो और अच्छे तरीके से होता है if the chips are softened by this steam. So as soon as white liquor becomes in contact with the chips, तो वो उसी साइकिल को फॉलो करता है जो इस डायग्राम पे एक्सप्लेन किया. That solution will break the structure of lignin or will break the bonds between cellulose and hemicellulose. As a result, we will get fibers of cellulose mainly and hemicellulose, and these fibers will be present in a liquid, and that liquid will contain the broken structure of lignin and unreacted solution of white liquid. ठीक है. रिपीट कर दीजिए. जब व्हाइट लिक्विड वुड चिप के साथ रिएक्ट करेगा तो उसने इस लिग्निन को अटैक करना है, इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करना है जो सेलुलोज और हेमिसेलुलोज के साथ. जैसे ही वो बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, फाइबर्स विल बी सेट फ्री. अभी जो इंटेंगल्ड सीमेंटेड फॉर्म में फाइबर्स पड़े हुए हैं, जैसे ही रिएक्शन होगा, लिग्निन ब्रेक होगा, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो ये फाइबर्स फ्री हो जाएंगे. And as a result of this reaction, we will have two-phase mixture. One phase is of solid, and that solid is of these fibers. Cellulose, hemicellulose के fiber होंगे solid में. And second phase will be of liquid, और उस liquid में lignin को break करने से जो compound बनेंगे वो, and the unreacted white liquid, वो component शामिल होंगे. So the stream leaving the digester, it will have this two-phase mixture, that is fiber and a liquid solution. So this mixture is sent into a blow tank where we reduce the pressure. By the way, in digester, the temperature is up to 170 degrees C, while the pressure is up to 9 atmosphere. तो digester है उसमें टेम्परेचर 170 डिग्री सी होता है और प्रेशर 900 किलो पास्कल या अप टू 9 एटमॉस्फेयर तक होता है. So we are keeping pressure up to 9 atmosphere because the lignin structure will break at the temperature of 170 degrees C. प्रेशर 9 किलो पास्कल इसलिए रखा हुआ है क्योंकि लिग्निन के स्ट्रक्चर ने केमिस्ट्री के मुताबिक 170 डिग्री सी पे ब्रेक होता है. तो अगर 9 की बजाय हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर रखें यानी कि 1 एटमॉस्फेयर, and we increase the temperature up to 170 degrees C. ठीक है. अगर हम प्रेशर ना बढ़ाएं, उसको 1 एटमॉस्फेयर ही रखें और टेम्परेचर 170 डिग्री सी तक राइज करें, what will happen? This sodium hydroxide and sodium sulfide, they will be present in the form of solution, यानी कि इनको वाटर में डिसॉल्व कर लेंगे और हमारे पास व्हाइट लिक्विड सॉल्यूशन की फॉर्म में आ जाएगा. Now, if we increase the temperature of this solution up to 170 डिग्री सी, अगर इस सोल्यूशन का टेम्परेचर 170 डिग्री सी तक बढ़ाएं जो कि रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड एट 170 डिग्री सी वाटर विल वेपोराइज. वाटर ने वेपोराइज हो जाना जिसमें ये दोनों सॉल्ट डिसॉल्व हुए हैं. जैसे ही वाटर वेपोराइज होगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड ये कंपाउंड की फॉर्म में
मौजूद होंगे। यानी कि जैसे ही आयनिक कंपाउंड्स को इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स को हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने रिस्पेक्टिव आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्सालाइन, सोडियम एंड सल्फाइड। ब्राउन कलर के हमारे पास फाइबर्स या पल्प होती है along with the liquid solution. So we send this two-phase mixture onto a washer, and in this washer okay. So after washing and separation, the pulp is sent into this stock tank, again a storage tank, while the liquid solution it is sent into this degassing tank. ठीक है। सो वॉशर में दो जॉब्स हैं, एक तो लिक्विड की पल्प से सेपरेशन और दूसरी पल्प की वॉशिंग। पल्प की वॉशिंग इसलिए करनी है कि कोई सॉल्ट जो अमाउंट है वो पल्प के साथ अटैच हो सकती है। और हम जितने भी सॉल्ट्स यूज कर रहे हैं जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम सल्फाइड, दे आर रेडली सोलेबल इन वाटर। सो वी वॉश पल्प विद वाटर। तो वाटर जो है वो अगर पल्प के साथ कोई अटैच्ड सॉल्ट लगा हुआ है उसको रिमूव कर देगा। एंड बाय द वे पल्प इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो फाइबर्स हैं वो वाटर में सॉल्युबल नहीं है। तो एज ए रिजल्ट क्लीन पल्प it is separated from the liquid and sent into the stock tank, while the liquid separated from pulp it is sent into this degassing tank. ठीक है। अब now we have a clean pulp in this stock tank, then this pulp is converted into paper in the remaining section, this right hand section of the plant, while the liquid, as it has salt, so it is sent onto this right hand section of the plant where we convert this liquid into the white liquid. So first let's see how pulp is converted into the paper form. So from stock tank, the pulp is sent onto multiple screens connected in series. Okay. These two things are representing the screens. Usually there are more than two screens present on the plant. So the job of this screening or filtration, its job is to separate large chives, knots, dirts, and other debris from the pulp or fibers. Uh, जैसे कि अगर आप इस डायग्राम को देखें तो जैसे ही पल्प ब्रेक होता है, जैसे ही बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और फाइबर्स मिलते हैं, सो सम ऑफ द फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेंगल्ड स्ट्रक्चर, जिसको आम जुबान में गुंजल कहते हैं। ठीक है। दे आर नॉट अलाइंड, दे आर नॉट स्ट्रेट। ठीक है। इंस्टेड दे आर टेंगल्ड, गुंजल की फॉर्म में होंगे। सो इफ वी डू नॉट सेपरेट these knots, these tangled structure of the fiber, then the finish of the paper surface will be poor. So that is why we have to separate these tangled fibers from the rest of the straight or aligned fibers. So this job is done on these screens
where we remove knots, dirts, shribes या आम जुबान में गुंजल from the aligned fibers. After separating the knots or tangled fibers, the aligned fibers they are sent through these lines into these two equipment, beater and jordan. Now, in these two equipments, there can be more equipments in addition to beater and jordan. The job of these equipments it is to perform a particular kind of job. Like I want my paper to have a very bright surface. I want my paper that it should not allow water or any other liquid to penetrate into it. I want my paper to have a blue color or a green color or red color. I want the mechanical strength of the paper to be very high. Okay? So various jobs like this. Uh, in order to obtain these particular specific output from the paper, we need to add certain compounds into the pulp of the paper. तो वो सर्टेन कंपाउंड अगर कोई कलर होगा तो हम उसमें वो कलर का सॉल्ट ऐड करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये जो ब्राउन पल्प है इट शुड बी ऑफ वाइट कलर तो हम कोई ब्लीचिंग एजेंट ऐड कर रहे होंगे। इफ वी वांट टू हैव द पेपर नॉट टू एब्जॉर्ब एनी वाटर तो हम कोई वाटर रिपेलेंट सॉल्ट ऐड करेंगे पल्प में, थिंग्स लाइक दैट। So those particular jobs are performed in these equipments. जो भी एडिशन आपने करनी होगी यू विल ऐड दोज केमिकल्स इन दीज टू इक्विपमेंट्स। और और भी इक्विपमेंट हो सकते हैं जो इनके साथ सीरीज में कनेक्टेड हो। सो आफ्टर एडिंग दोज एडिटिव कंपाउंड्स द प्रिपेयर्ड पल्प इट इज सेंट ऑन टू अ पेपर फॉर्मिंग मशीन। ठीक है, आपने जो भी एडिशन करनी हो वो सॉल्ट्स ऐड करके हम पल्प को पेपर फॉर्मेशन मशीन में ऐड कर देते हैं। And that paper formation machine is known as four dryner। ये नाम लिखा हुआ है, इस पेपर फॉर्मेशन मशीन को हम फोर ड्राइनियर कहते हैं। So it includes a head box, a sheet, porous sheet, a drying section, and a stack cylinder। ठीक है, these all are the components of a paper formation machine। So the job of the head box is to distribute pulp onto this sheet। क्योंकि पेपर जो है वो आपके पास एक पेज की फॉर्म में एक शीट की फॉर्म का प्रोडक्ट है और पल्प जो है वो एक अलाइंड फाइबर है। तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट दिस अलाइंड फाइबर्स इनटू अ पेज शीट we need to distribute this pulp onto a sheet uniformly। ठीक है, सो पल्प को हमें एक शीट पे यूनिफॉर्मली फैलाना है, डिस्पर्स करना है और फिर उसी डिस्पर्स पल्प को हमने एक पेपर शीट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सो द जॉब ऑफ दिस हेड बॉक्स is to distribute the pulp or fibers uniformly onto this sheet। तो जितना यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है उतना ही यूनिफॉर्म थिकनेस की पेपर की एक शीट डेवलप होती है। जितना नॉन यूनिफॉर्मली पल्प डिस्ट्रीब्यूट होगा उतना ही एक जो थिकनेस है वो पेपर की वेरी कर रही होगी उस शीट में। सो दिस डिस्ट्रीब्यूशन is a very critical step in this paper manufacturing machine। By the way, pulp is a solid material, so in order to transport it from one point on the plant to the other point, हम उसको वाटर में मिक्स करते हैं एंड वी मेक अ स्लरी। तो स्टॉक टैंक से मूविंग थ्रू स्क्रीन्स, बीटर जॉर्डन एंड देन अप टू दिस हेड बॉक्स शीट, जो पल्प है इट इज मूविंग अलोंग विद वाटर, वो वाटर के साथ मूव कर रही है। ठीक है, so when pulp is distributed onto this sheet, this sheet is porous in nature, इसमें pores होंगे। So when we will distribute pulp water mixture onto this sheet,
pulp will be retained by this sheet, और चूंकि ये porous है तो water will filter out from the sheet. तो ये जो शीट है वो पल्प को रिटेन करेगी और पल्प के साथ जो वाटर आ रहा है उसको फिल्टर कर देगी. दैट वाटर इज कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ दिस शीट. ठीक है. और चूंकि फाइबर्स जो है वो व्हाइट कलर के होंगे, अगर व्हाइट पेपर बना रहे हैं तो ये जो वाटर होगा ये हमें एक व्हाइट लुक देगा. दैट इज व्हाई इट इज टर्म्ड एज व्हाइट वाटर. ओके. आफ्टर सेपरेटिंग द पल्प फ्रॉम द वाटर, द सेम शीट, it transfers the pulp onto these rollers. ये large rollers हैं who rotates at a particular RPM continuously. ठीक है. तो जैसे ही पल्प इस शीट से, पोरस शीट से ड्राइंग सेक्शन में एंटर होता है तो यहाँ पे एक दूसरी शीट अटैच होती है. ठीक है. एंड पल्प इज ट्रांसफर्ड ऑन टू दैट शीट. और फिर पल्प रोलर्स की रोटेशन के साथ, जिस तरह से मैं कर्सर को मूव कर रहा हूँ इस तरह मूव करती रहती है. ओके. तो द शीट along with which pulp is moving, ठीक है, it carries the pulp through these dryers like this. एंड ये जो शीट है फिर ये उस पल्प को पेपर की फॉर्म में इस कैलेंडर स्टैक पे ड्रॉप करती है. Now these rollers, we inject steam into these rollers. Now steam जो है वो फिर it heats up the surface of these rollers. As a result, the water which is present in this pulp, it gets evaporated. Sorry, vaporized, not evaporated, vaporized. In rollers में steam inject करते हैं continuously. Steam जो है वो इन rollers के surface को heat up करती है. जब हीट आ जाती है सरफेस पे तो पल्प में जो वाटर प्रेजेंट होता है वो इस हीट की वजह से वेपोराइज हो जाता है. ठीक है. इसलिए इस रोलिंग सेक्शन को हम ड्रायर कह रहे हैं क्योंकि हम पल्प को ड्राई करते हैं. सेकेंडली यू कैन सी टू रोलर्स आर कनेक्टेड. ठीक है. इन कॉम्बिनेशन फॉर्म लाइक दिस. एक रोलर के ऊपर दूसरा रोलर है. So these one of the roller is movable. इनमें से एक रोलर मूवेबल होता है, यूजुअली टॉप वाला. उससे क्या होता है कि we not only dry the pulp but we also press the pulp. जब शीट इन दो रोलर्स के दरमियान आती है तो we press the pulp with the help of the movement of one of the roller. जब उसको प्रेस करती है तो जो पल्प होती है वो उस पर स्ट्रेस आता है, उस पर प्रेशर आता है. एज ए रिजल्ट इट स्टार्ट्स कन्वर्टिंग फ्रॉम ए फाइब्रस मटेरियल इनटू ए पेज शीट. तो उस प्रेशर की वजह से वो एक फाइबर से एक शीट की फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है. So dryers are not only drying the pulp, but with the help of pressure, they are also converting pulp into a paper sheet. तो जब वो पल्प इन मल्टीपल रोलर से शीट के थ्रू मूव करती है एंड लाइक दिस एंड इट रीचेस टू दिस लास्ट रोलर, at this point the pulp is completely converted into a paper sheet. पल्प जो है वो completely एक पेपर शीट में कन्वर्ट हो गया होता है. Now that paper sheet is rolled over through these smaller rollers. क्योंकि ड्राइंग सेक्शन में टेम्परेचर हाई होता है, हम उसको स्मॉल रोलर से पास कराते हैं, उसके टेम्परेचर को ड्रॉप करते हैं एंड देन द फाइनल पेपर इज कलेक्टेड. फाइनल पेपर शीट इज कलेक्टेड ऑन टू दिस फाइनल रोलर. और फिर हम उस फाइनल पेपर शीट को इस रोलर पे रोल कर देते हैं. तो दिस इज हाउ, और दिस इज द सेक्शन इन विच पल्प इज कन्वर्टेड इनटू अ पेपर शीट. तो इस सेक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन प्लीज आस्क. सर, अगर हमारे पास जो हमने बीटर और जॉर्डन से जो भी पल्प लिया है वो कलर्ड है तो भी हमारे पास ये जो वाटर आएगा नहीं, वो डिफरेंट शीट कलर के का ऊपर से वो कलर होगा. जी सर. होगा. इसके अलावा कोई और क्वेश्चन?
सर ये ब्राउन स्टॉक चेस्ट के बारे में बता दें। चूंकि जो पल्प आप डायरेक्ट वुड से लेंगे या वुड नॉन वुडी मटेरियल से लेंगे तो नेचुरली उसका कलर ना ब्राउन, लाइट ब्राउन सा होगा। इसलिए इस स्टोरेज टैंक को जिसपे हम उस ब्राउन पल्प को स्टोर कर रहे हैं अलोंग विद लिक्विड सॉल्यूशन, उसको ब्राउन स्टॉक चेस्ट कह रहे हैं। और सर ब्लू टैंक का क्या पर्पस था? चूंकि डाइजेस्टर में प्रेशर हाई है तो कुछ वॉलेटाइल मटेरियल्स होंगे जो पल्प में एब्जॉर्ब हो जाएंगे। जैसे ही ब्लो टैंक में हम प्रेशर रिड्यूस करेंगे, रिलीज करेंगे, तो वो जो वॉलेटाइल मटेरियल पल्प में एब्जॉर्ब है वो वेपराइज होंगे, वो वॉलेटिलाइज होंगे और पल्प से सेपरेट हो जाएंगे। तो वो जो वॉलेटाइल होंगे वो टॉप से लीव करेंगे, पल्प और लिक्विड नेक्स्ट इक्विपमेंट पे मूव कर जाएंगे। सर पेपर की क्वालिटी किस इक्विपमेंट पे डिपेंड करती है? क्वालिटी को प्लीज डिफाइन करें क्योंकि ये एक बहुत मतलब सर पेपर की डिफरेंट टाइप्स होती है ना, कुछ बहुत ज़्यादा चीप होते हैं, कुछ एक्सपेंसिव होते हैं जो थिक होते हैं थोड़े, जैसे हमारी वो ड्राइंग शीट्स थी, और कुछ वो कॉपी वगैरह के होते हैं वो बहुत ज़्यादा चीप से होते हैं। तो ये क्वालिटी किस पे डिपेंड करेगी? ये बेसिकली क्या होगा कि जो कस्टमर है वो इंडस्ट्री में मैंने आपको बताया था एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट होता है। तो जो कस्टमर है वो R&D डिपार्टमेंट में जाएगा और अपनी रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन करेगा कि मेरा पेपर जो है वो लाइक वाइट कलर का होना चाहिए, ठीक है, और उसकी सरफेस ब्राइट हो, और उसकी वो 80 ग्राम का पेपर हो या वो 60 ग्राम का पेपर हो। तो कुछ रिक्वायरमेंट्स उसको बतानी पड़ेंगी। फिर इंडस्ट्री वाले स्मॉल स्केल पे कुछ पेपर्स डेवलप करेंगे अपनी रेसिपी के अकॉर्डिंगली और फिर कस्टमर को दिखाएंगे। अगर कस्टमर को वो सैंपल्स पसंद आ गए तो वो कहेगा हाँ जी इस तरह का चाहिए। तो इंडस्ट्री को पता होगा कि जो जो जिस सैंपल से कस्टमर सेटिस्फाई हुआ है उसकी रेसिपी हमने ये सेट की थी, वो सेम रेसिपी इस पेपर सेक्शन पल्प एंड पेपर सेक्शन पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है। अगर आपको थिक पेपर चाहिए यानी कि जिसमें मोटाई ज़्यादा हो तो आप ड्रायर्स में जो कंप्रेशन है, जो प्रेशर एप्लीकेशन है वो बहुत कम रखेंगे। अगर आपको थिन पेपर चाहिए बहुत बारीक था तो यहाँ पे आप प्रेशर ज़्यादा लगाएंगे ताकि पल्प ज़्यादा कंप्रेस हो और एक फाइन शीट पेपर की डेवलपमेंट हो। अब कोई कलर की रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चीज़ें ऐड कर देते हैं। अगर आप चाहते हैं उसकी सरफेस पे वाटर एब्जॉर्ब ना हो उससे रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो इस तरह से कस्टमर बताएगा ये चीज़ चाहिए तो R&D डिपार्टमेंट अकॉर्डिंगली उसकी रेसिपी बनाएगा और फिर कस्टमर को बताएगा। कस्टमर बताएगा कि ये सिंपल मेरी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है या नहीं। ये सर ठीक। Any other question regarding this section? Okay. So we separate pulp from the liquid solution in these washers, and from this degassing tank, a major amount of the liquid goes into this storage tank, which is known as weak black liquor storage. Okay. After reacting with the wood chips, the white liquor or cooking liquor gets the color black. तो वो जो ब्लैक कलर के लिक्विड को जब हम पल्प से सेपरेट करते हैं इस पॉइंट पे तो उसको फिर स्टोर करते हैं। ठीक है, इसलिए इस टैंक को वो वीक ब्लैक लिक्विड स्टोरेज कह रहा है। इस लिक्विड में अनरिएक्टेड सॉल्ट्स जो कि कुकिंग लिक्विड में मौजूद थे और वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिग्निन के बॉन्ड्स ब्रेक होने से बने वो इस लिक्विड में मौजूद होंगे, इस ब्लैक लिक्विड में। ठीक है, एंड बिफोर गोइंग इनटू दिस इवेपोरेटर यानी कि इस स्ट्रीम में विच इज एंटरिंग इनटू द इवेपोरेटर, the amount of solids present in this black liquid, it is 20% and remaining is water. So we send this black liquid having 20% solids into this multi-effect evaporator where we vaporizes water and solid concentration is increased up to 35%. 35%, 20% से वाटर वेपराइज करने के बाद 20% से सॉलिड की जो कंसंट्रेशन है
it is increased up to 35%. Now this concentrated black liquor is then stored in this storage tank. ठीक है, और फिर ये concentrated black liquor through this line goes into this heat exchanger section. This 6 number heat exchanger is an evaporator. So this 35% black liquor goes into this evaporator, which further vaporizes water and increases the concentration of the solid compounds. And in this evaporator, we remove major amount of water. And the solid obtained from this evaporator has very high concentration. This concentration varies in the literature. So somewhere it is written 90%, somewhere it is written 91%, or मैंने 80% भी पढ़ा हुआ. So as per the industrial requirement, the water is removed further in the 6 number evaporator, and the concentration of salts are increased further. So that concentrated salt comes out from this direct evaporator, and it is stored in this mixing tank. From this mixing tank, this concentrated slurry is sent into this furnace 8 number, where we heat this concentrated black liquor. यहाँ पे हम डायरेक्टली उसको हीट करते हैं, एंड उस हीटिंग से क्या होता है कि इफ दिस कंसंट्रेटेड ब्लैक लिक्वर, इफ इट हैज एनी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी, क्योंकि लिग्नन जो है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, तो वो जब ब्रेक होगा तो उसके ब्रेकेज में के रिजल्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही बनेंगे. ठीक है. So the organic compounds present in this concentrated black liquor, they are basically combusted in this furnace. वो इस फर्नेस में कंबस्ट होते हैं, क्योंकि हमने इस ब्लैक लिक्वर को व्हाइट लिक्वर में या कुकिंग लिक्वर में कन्वर्ट करना है. और जो कुकिंग लिक्वर है या व्हाइट लिक्वर है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स का सोल्यूशन. तो अगर हम इसको रिकन्वर्ट कर रहे हैं इनटू व्हाइट लिक्वर, then this should not have any organic compounds in it. So that is why this concentrated black liquor is sent into the furnace, where all of the organic compounds present in this concentrated black liquor are combusted, and as a result of combustion they are converted into carbon dioxide and water, which are vapors or gases. और वो gases या vapor जो है वो easily separate हो जाती हैं. While melted salt in the form of molten state, meaning very or highly viscous slurry, बहुत ज़्यादा viscosity इसकी होती है from this furnace, that is obtained, and it is sent, this molten salt is sent into this 9 number mixing tank, where we add a weak solution of sodium hydroxide. We mix this molten salt into a weak solution of sodium hydroxide. ये जो 9 number tank है, डायरेक्टली वाटर में डिसॉल्व इसलिए नहीं करते बिकॉज द रिएक्शन ऑफ दिस molten salt with water is highly exothermic. तो उससे फिर इतनी हीट जनरेट होती है कि we cannot control it. So that is why we dissolve this molten salt into weak solution of sodium hydroxide, so that we can control it, its exothermic nature. उस molten salt को after dissolving it in sodium hydroxide weak solution, we store it into this green liquid tank. ठीक है, इसको हम green liquid कहते हैं, जो salt हमें फर्नेस से रिक्लेम होता है. और ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन से जो गैसेस जनरेट होती हैं, दे आर सेंट इनटू दिस इवेपोरेटर, एंड इन दिस इवेपोरेटर वो गैसेस दे एक्सचेंजेस देयर हीट विद दिस 35% concentrated black liquor. अपनी हीट एक्सचेंज करने के बाद those gases left the plant through this stack, और 35% जो सॉल्ट है वो कंसंट्रेटेड फॉर्म में दोबारा से मिक्सिंग टैंक, और मिक्सिंग टैंक से इस फर्नेस में चला जाता है. So this is how this furnace operates. So we get green liquor. जी सर ये ग्रीन लिक्विड के आगे से रिपीट करना. Okay. So molten salt obtained from furnace, it is mixed in weak solution of sodium hydroxide.
and that sodium hydroxide plus molten salt solution is stored in this tank, and at this moment this liquor is known as green liquor. और जब हम ब्लैक लिक्विड में ऑर्गेनिक वाटर जनरेट होते हैं हाई टेम्परेचर पे, उनकी हीट को हम इस इवेपोरेटर में यूज करते हैं, और ये जो 35% ब्लैक लिक्विड आ रहा है उसमें से फर्दर वाटर वेपोराइज करवाते हैं। वो गैसेस अपनी हीट एक्सचेंज करने के बाद इस टैग के थ्रू प्लांट से एनवायरनमेंट में चली जाती हैं, और कंसंट्रेटेड ब्लैक लिक्विड जो है वो इस लाइन के थ्रू मिक्सिंग टैंक, और फिर मिक्सिंग टैंक से होता हुआ 8 नंबर फर्नेस में पहुंच जाता है। So this green liquor most of the time has the sodium sulfate impurities. Sorry, sodium carbonate impurities. क्योंकि जो कुकिंग लिक्विड है उसमें सिर्फ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम सल्फाइड होना चाहिए। सो वो जो सोडियम carbonate है, in order to separate it or in order to remove it from our green liquor, we mix it in this causticizing section with lime, calcium hydroxide. As a result of reaction, sodium carbonate is converted into sodium hydroxide, which is the required salt, and calcium carbonate is produced in the form of precipitates. Now, precipitates, as they are solid compounds, they settle down, while sodium hydroxide formed in this causticizing tank is obtained, and in the settling tank basically हम इस settling tank में calcium carbonate और sodium hydroxide को separate करते हैं। तो calcium carbonate यहाँ पे separate होता है, and sodium hydroxide is reused through this line as a cooking liquor, which is then sent into this digester. So this is how this whole process works. इस whole process में हम ना सिर्फ पल्प से पेपर बना रहे हैं, बल्कि जो लिक्विड बच जाता है जिसको हम सेपरेट करते हैं पल्प से एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, उसको हम दोबारा यूजेबल वाइट लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं। So any question regarding this regeneration section? जी क्लास, any question? सर स्टार्टिंग से डाइजेस्टर नंबर 3 तक एक्सप्लेन करते हैं। सर स्टार्टिंग से डाइजेस्टर नंबर 3 तक। Okay. So logs means the stem of the tree. They are initially sent into the barking drum, और barking drum में basically we remove the branches from the stem of the tree. जब वो रिमूव हो जाती हैं, फिर जो ब्रांचेस से फ्री लॉग्स हैं उसको हम एक चिपर में बेचते हैं। चिपर क्या करता है, वो लार्ज लेंथी लॉग्स को स्मॉल पार्टिकल साइज में कन्वर्ट करते हैं, एक चिप के साइज में, जैसे लेस की चिप्स होती हैं अप्रोक्सीमेटली उस साइज में रिड्यूस कर देगा। तो वो जो चिप्स है वो फिर चिप बिन में जाएंगी। ये एक स्टोरेज वेसल है जो कि हमारे रिएक्टर, जिसको डाइजेस्टर कह रहे हैं, उसके टॉप पे लगा होता है। सो चिप बिन से चिप्स डाइजेस्टर में जाएंगी, इस टैग से कुकिंग लिक्विड, और बॉटम से हम स्टीम ऐड करेंगे। ओके सर, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये हमारे पास टैग, फ्यूम कलेक्टर और एयर हीटर यहाँ पे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इवेपोरेटर के ऊपर, इनके क्या पर्पस है? ओके जी, तो जो एयर हीटर है ये बेसिकली क्योंकि हम फर्नेस में कंबशन कर रहे हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, तो कंबशन के लिए हमें एयर चाहिए। तो वो एयर हीटर से एयर हीट होती हुई फर्नेस में आती है। यहाँ पे एक समझ लें हीटर लगा होगा, जो कि फ्लू गैस जो यहाँ पे जनरेट होती हैं वो अपनी हीट एयर को देंगी थोड़ी सी, जिससे एयर प्री हीट हो जाएगी।
और फिर एयर को हीट करने के बाद वो इवेपोरेटर में चली जाएंगी, जहाँ पे वो 35% वाले ब्लैक लिक्विड को हीट अप करेंगी। एयर को हीट करके ही फर्नेस में इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि अगर एटमॉस्फेरिक एयर यूज करेंगे ना, जो 25-40 डिग्री सी तक होती है, तो जब वो फर्नेस में जाएगी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वाली एयर, तो फर्नेस में जाके वो पहले हीट एब्जॉर्ब करेगी, क्योंकि कंबशन रिएक्शन जो है वो 900 डिग्री सी प्लस टेम्परेचर रिक्वायर करते हैं ना। तो जब तक एयर कंबशन टेम्परेचर पे नहीं आएगी, वो कंबशन रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। तो अगर हम एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर वाली एयर को फर्नेस में ऐड कर देंगे, तो वो जब फर्नेस में जाएगी तो रिएक्शन नहीं करेगी, पहले वो फर्नेस में मौजूद अवेलेबल हीट को एब्जॉर्ब करेगी और अपने टेम्परेचर को रेज करेगी टिल द रिएक्शन टेम्परेचर। सो कंबशन की बजाय जो ज़्यादा प्रोसेस फिर फर्नेस में हो रहा होगा, वो एयर हीटिंग का हो रहा होगा। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम एयर को फर्नेस में ऐड करने से पहले ही हीट कर देते हैं, ताकि जब एयर हीटेड फॉर्म में फर्नेस में जाए तो वो फर्नेस में अवेलेबल हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब ना करे, और जो फर्नेस में अवेलेबल हीट है वो कंबशन में कंज्यूम। दूसरा आपने कहा फ्यूम कलेक्टर। हो सकता है कुछ कंपाउंड्स ऐसे हों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, जो पर्टिकुलर अनवांटेड फ्यूम्स या गैसेस जनरेट करें, ऐसी गैसेस जिसको हम डायरेक्टली इन्वायरमेंट में नहीं भेज सकते। तो उन उन गैसेस को या वेपर्स को कलेक्ट करने के लिए ये एक फ्यूम कलेक्टर लगा हुआ, उनको कलेक्ट करते हैं, जो कि एनवायरनमेंट को नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती हैं, और जो CO2 और वाटर वेपर्स होते हैं उसको स्टैक के थ्रू इन्वायरमेंट में भेज देते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन? सर जब हम लिक्वर की रीजनरेशन करते हैं तो उसमें वाटर कब और कहाँ ऐड करते हैं? वाटर जो है वो मैंने आपको बताया ना, मोल्टन सॉल्ट को हम वीक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में ऐड करते हैं। तो जो वीक सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन है वो वाटर में ही बना होता है। कोई और क्वेश्चन? जी, क्लास के सवाल। इसमें सर जी, सर आप हमारे मिक्स का सिलेबस बता दें। वो थर्सडे वाले लेक्चर में मैं बताऊंगा। सर जी पढ़ना भी है सर, जरा थोड़ा बहुत एंट्री दे दें। तो क्योंकि थर्सडे को भी टॉपिक्स पढ़ाने हैं ना, तो फिर उसके बाद ही टोटल जब कोर्स कवर हो जाएगा तो उसके हिसाब से फिर आधा मिड तक और रिमेनिंग आधा एंड तक। ये क्लास, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? सर ये सेटलिंग टैंक से जो आगे था ना वो एक्सप्लेन करते हैं। कौन से वाला सेटलिंग टाइम? जो कॉस्टिंग साइजिंग के बाद लगा हुआ है जिस पर? यस सर। कॉस्टिंग साइजिंग मैंने आपको बताया ना कि हम सोडियम कार्बोनेट को कन्वर्ट करते हैं जो सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय रिएक्टिंग इट विद लाइम। अब जब सोडियम कार्बोनेट और लाइम का रिएक्शन होता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में होता है और प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से प्रेसिपिटेट को सेपरेट इस सेटलिंग टैंक में करते हैं, यानी कि बॉटम जो प्रेसिपिटेट्स हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे और एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड आगे मूव कर जाएगा, जिसको हम स्टोरेज टैंक में स्टोर कर लेते हैं। जी, कोई और क्वेश्चन?
कोई और क्वेश्चन नहीं? नो सर। चलिए फिर इंशाल्लाह थर्सडे को मुलाकात